good? Perfect. Good afternoon, everyone. It's indeed a pleasure to welcome you all at the NICAT facility. On behalf of my team, I'd like to welcome you all. To begin with, I would like to call upon Mr. Imran Jatla, who happens to be the program director at NICAT. I'd also request Mr. Zubair Khalik to please join us on stage. Okay. Good evening and Assalamu alaikum everyone, ladies and gentlemen. A very warm welcome to NICAT. Especially I'm really excited and delighted to see Sir Zoe being here. Personally, he's my favorite and I've never been shy of saying that मैं बड़ा होके ज़ोहैर खालिक बनना चाहता हूँ. So I'm really inspired and motivated by him. Very warm welcome to all of you. मैं थोड़ी सी marketing कर लूँ. NICAT is Pakistan's first vertical incubation center. And this is a joint venture between Ministry of IT, Ignite, and NASTAP. NASTAP is National Aerospace Science and Technology Park. This is old airport की सारी premises हैं. This has been transformed into a National Aerospace Science and Technology Park, जिसमें aerospace and IT both are the focus. So this is not just for aviators. This is for everyone. NASTAP is for everyone. Aerospace in itself is a huge space. So you all of you professionals can one way or another get associated with NASTAP. यहाँ पे एक co-working space है, एक pre-incubator है, incubation center है, commercial area, private area जहाँ पे as a private company आ सकते हैं, and then all of the R&D setups of Pakistan Air Force are co-located over here. So अगर आप Pakistan Air Force के साथ काम करना चाहते हैं या private sector के साथ, you have a place over here. A very warm welcome to you and special thanks to CXO Global Forum. Kamal Masroor bhai, you always have been very kind. This is your place, sir. We would love to host you over and again, every week. So very warm welcome to NICAT ji. Now I'd like to call upon Zubair sir to share his views with us, please. Assalamu alaikum, good afternoon to everybody here. Very lovely to be back. I think it's my third or fourth time, so thank you for having me. As soon as we get the technology sorted out, we'll proceed. Right, thank you. So I was asked to speak about effective growth for startups. Interesting subject in general, but I think particularly in the current environment that we are in, the way things are. I don't know how many startups there are here at the moment. Would you just want to raise your hands and say how many people? Oh, geez, just, acha, chalo, 5-7, that's okay. So, first of all, the question is, what is effective growth? Now, it can be anything. People imagine all kinds of things. We are going to double every year. We're going to triple every year. When I did a little bit of research, what it turns out to be is that an average growth rate that, let's say, an investor is expecting is somewhere between 15 to 25% per annum. Okay, so now that's pretty reasonable by most standards. I think what you need to be able to understand is that the most important factor for high growth is obviously a large market opportunity. And certainly if you're sitting in Pakistan with 240 million people, that I would call a large opportunity by any standards anywhere in the world. The other thing which a lot of startups I would like to point out to them, and it's a very important part, is that when you're growing, sometimes people grow in a very unmanaged way, and often that leads to failure. I would argue that one of the most important factors that you need to keep in mind when you're growing is the cost of acquisition of your customer. What is that cost? The cost is that of the marketing, the advertising, the PR, and also the cost of your sales team if there's one. Okay, all of that together, you need to be able to understand what it costs to get one customer on board. And is that customer then going to pay you more than the cost of acquisition? And that's when it becomes worth it. Otherwise, you're going down a very, very slippery path if that's the case. So
Now, obviously, growing to scale is critically important. It's something that, obviously, without that, no startup is ever successful. But before you get there, there are so many prerequisites which I think need to be just thought about before you get to that stage. Is there a market for your product? Often people who are high-tech get very excited with the product that they have because it's very nice, it's very different, it's something that everybody can use, but do you have a market for that product? Is it out there? How much competition do you have? If you have 5 other people selling the same product, then perhaps go back and think again. It may not be the product that is going to be successful out there. Again, does your product or service have a USP, a unique selling point? How is it different from the one that's being sold by competition, for example? I think that's very critical to understand and absorb. What is your target market? Aksar people are not really clear what that target market might be, so they just go helter-skelter into it. Again, just thinking, mera product bahut zabardast hai, therefore it must be good. Okay? You've got to have a very fine-tuned understanding of what that product market might be. I'll tell you a little story. Many years ago, and this is way long ago, there was a product called Iridium. It was a worldwide satellite network, much before GSM and 3G and others came along. And it was Motorola's most prized product at the time. I used to work for Motorola in those days. So I used to hear about Iridium every day. And it cost billions of dollars to launch it, put it out there, and it was a great success technology-wise. Only problem is, where do you go and buy it? I was living in London in those days, and I used to travel to Chicago all the time, which is the hub of Motorola. And you could spend all day trying to find out where to buy a Iridium handset, and there wasn't any. They just missed out on the most important part. What is your distribution process? That's something I put out there. Is that something that you are successful with? Okay. And by the way, Iridium died a natural death just because nobody could go buy the damn thing because it wasn't available. All right? It was a fantastic technology. It was redeployed, obviously, through the military and so on for other purposes. But at the time, it failed. What kind of marketing will you need? What kind of product distribution setup will you need? When we took Mobilink from 1 million to 32 million subscribers, and 1 million in 10 years, and then 32 million in 5, okay? What was one of the most essential things we changed? From having one wholesaler control the distribution, we said we break this down and we will have a product available in every high street. Because I London se aaya tha, so high street was the concept. But ab aap dekhen, every thele wala will be able to sell you a SIM card, right? And that was the philosophy. Go out there and make it available. So when people go buy their bread and eggs and milk and whatever else, they can be able to buy your product at the same time. Okay, that's so critical to understanding distribution. And how much funding will you need? Obviously, because do not plan something until you have the funds lined up for it. And I'll talk about the different ways of growth in a minute as well. Now, another thing that people often underestimate is the power of a team. Okay. You can be the most brilliant scientist on earth, or you can be the most high-tech guy, you can be Einstein. But unless you have a team which is going to work with you, it'll never happen. Okay, it's very simple. And there's no two ways about it. And the team, you need to be able to hire the right team. You need to be able to give them the right rewards and remuneration for it, market compare karke. A lot of the times I meet young entrepreneurs, startups, equity nahi denge, wo to meri apni hai. Now, often enough, that's the only thing you can give because you probably don't have the cash flows to hire a really good person. But you can get good people because they may be thinking like you and say, okay, give them a 5% equity stake. Or so if you're hiring, let's say, 50 people, you don't need to offer them all the stake. But let's say the top 10, 15 people, you need to get them on board so that they have a piece of their living in there as well. That is so very critical to what you need to do. The other thing that people often miss in the daily hustle bustle of trying to get the product out there is what is your company culture? What is the values of your company?
Even if it's a 5-member company, what are the values? आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या करते हैं सारा दिन, किस तरह आगे बढ़ते हैं, अभी हमारी यही बातें हो रही थी यहाँ पे. You need to have a culture where others also fit in and buy into the same culture. And that's the only way they will be happy to remain there in the long term. Because if they all have a shared values and shared culture together. And most important of all of this is, as the CEO or the leader of the company or the setup, you need to communicate. You need to communicate your vision, your dream, your passion, literally on a daily basis to the rest of the team. And that's the way you infect them and make them motivated to follow the same dream. Okay, because otherwise they will just think, okay, mera to ye itna sa part hai, this is what I'm supposed to be doing, and I've done my day's job, I'm going home. You know, there's a very, very famous, I'm sure most of you have heard of it before, but when President Jack Kennedy went to the aerospace thing, and he said, he met a janitor who was sweeping the halls, and he asked him, what are you doing? And he said, I'm helping put a man in space. Okay, so that was the shared vision. Now, if he just thought of himself as the guy who pushed out the dust, then there's no motivation to stay for the long term. But if he felt that the day the guy landed on the moon, he was a part of it, that's a whole different feeling, right? So get that feeling into the team that you're managing. That's so, so important for them. And then you must have a marketing strategy. And first of all, people often get obsessed with the logo. The logo is just there, guys. I mean, it's just anybody can put together a logo, right? The logo has to stand for something. It has to mean something to people. There are values reflected in the logo and the branding around it, your company ethos, your company thought process. When way back again, I'm sorry to keep using the example, but we said Mobilink reshaping lives. There was a reason for it, because we actually found that it was changing the way people were doing their business, their daily wage earning, if they were doctors in a hospital, for example, and so on. It changed the way that they managed their lives. And then we said we're reshaping lives, and not only for them, not only for the customers, but also for the people within the company every day. And you talk to a lot of those people today, they will walk up to you and say, you reshaped our lives. Okay? So that's so very, very important when you're building a business for the long term. You've got to be able to make sure that your branding resonates with the people who are working with you. That's so important. Obviously, you must build loyalty. And it's not only about attracting a customer, it's about repeat customers, okay? Because often enough, people go to some place, they buy a product or a service, and they say, yaar, phir nahi kabhi aayenge yahan wapas, toba meri. Right? So that's a terrible way, because it's now going to put up that cost of acquisition I talked about earlier. That cost of acquisition starts going that way. And that's when you start to fail. Okay? But often enough, the instinct is, haan ji, mere paas to itne lakh customer aa gaye, bas theek hai, bas kafi ho gaya. That's not the process you need to go through. You need to be able to build on that process and build customer loyalty, build understanding with your customer, do research, find out what's happening. And also always remember to watch out for your competitors. What the hell are they up to? How are they getting better than you? What are they doing which is different from you? It's so important to understand all of those things. Okay? So those are very, very essential tools as far as I'm concerned in building that effective growth for your business. Okay? These are fundamentals. Now we'll come to about 4 different types of what I call different types of growth. So there's organic growth, which is, hey, it's simple. You know, you grow organically. You have a natural growth process. You're investing your own funds, you're bootstrapping, you're making it happen on a daily basis, you're managing your cash flows, and then trying to increase your revenues, increase your profitability, and that's organic growth. That's the simplest form. It's probably the first stage of any company's growth as they go forward, and especially in startups, that is typically the normal route to follow. We then come to internal growth, where you're now, if you're getting some money in, invest in the business, invest in the technology, invest in operating efficiencies in your business so that it becomes that much better. And bring on new resource, bring on new talent, which will help you grow the company better. And that's the internal growth, okay? And again, that's probably logically second stage of any company's growth. We then come to strategic growth, where you say, okay, well, okay, now I'm growing well.
I can do strategic alliances, I can do partnerships, and so on. But even as you move forward, you're then investing in strategic acquisition, for example. You buy something which helps your business to the next stage. And finally, you talk about mergers, and I'll take that to the next stage, which is inorganic growth. So you're now talking about a very rapid, sudden shift where you are either merging or you're being acquired by somebody else. And that's where some of the challenges are the hardest. Because you have, again, I talked about company culture. Your culture could be very different from the culture of the other company. Your values, everything could be very different. And then it becomes that much more challenging in an inorganic growth phase. A lot of it is, that's where the risk of failure is the highest. Often the processes and the systems, the backends don't meet, they don't match. So again, those are red flags for when you are going for that acquisition or merger phase, that you make sure all of those things are something you feel comfortable with before you get to the next stage, okay? So now I've talked about, I mean, I could go on forever, but I've got about 12 minutes or something, I was told. But this is, I think, fundamental to your effective growth as you grow your companies and move forward. Develop a strategy, okay? Make sure that you understand your product well and have a proper strategy, literally written down, okay? Because aksar, you take it around in your head and you miss a few bits on the bit, right? So write it down, make sure it's something that all of your team buys in completely. Understand your competition, do the research, because the market changes every day. All markets anywhere in the world will change. They are dynamic. Everything is moving, everything is changing. The rupee-dollar rate we were just discussing is changing. Does that impact your inflows, your resource input, or does it impact your outflows, and so on? Just as one example. Set goals. It's very, very important to set literally daily, weekly, monthly goals for you to then aspire to, wake up every morning and go for them. Because if you're just bumbling along, hey, you know, elephants roam around the forest all day, they're very big guys, but they don't get anywhere, okay? So you got to be able to manage where you're going and how you're going to get there. Create a plan, and easier said than done, execute the plan, okay? Or as Nike would say, just do it. It sounds very easy, but everything that I've spoken about until now is an element to build into that plan that you will then be ready to execute. I think that's the way you should think about it. Okay? Now, it's very easy in all of this to run around and drive yourself crazy, okay? And what that means is you end up affecting your health, your personal life, your marriage maybe, your partnerships, your relationship with your friends and family. All of this is the collateral on the way. Now, again, you get to the stage I am in my life. I've done that several times, to say the least. But one thing I'd always rule, I will work, let's say and again, it's something that different people have different ways of managing. All through my career, I never slept more than 4.5 to 5 hours, okay? And that's why I look 80 right now, but that's, that's fine. Not everybody can live like that. Some people will need 7 to 8 hours of sleep. If that's what you need, get the sleep, because that's the only way you will go forward and succeed. People talk about jet lag. I say, what's jet lag? I've never felt jet lag, because in my mind, there is no such thing, okay? I would cross from, as I mentioned earlier, from London to Singapore, land at 6 in the morning and spend the whole day working, and then get a good night's sleep and fly back to Lahore. No problem, okay? So it's all something that stems out of discipline. And I know again that in the Gen Z, the millennial, all of this, discipline is a nasty word people don't like much, and it's purane logon ke liye koi aisi cheez hai, bude logon ke liye. But I tell you, there is no replacement for discipline in your life and drawing the boundaries. I've always had the rule that I would work Monday to Friday flat out.
As I said, if it takes 20 hours a day, that's fine. But the weekend is always my own. That's the rule. Okay, and the weekend is for spending with family. Weekend starts for me at Friday at 7 o'clock in the evening. That's it. Uske baad, I'm not going to take any phone calls which are work related. If it's a friend calling, 100 dafa, but I spend the time with the family. By Sunday night, I am rejuvenated, I'm recharged to be able to face the challenges again, Monday again. Bring it on. That's how it should be, okay? And that's how, if you manage that, you will succeed, inshallah. The people who don't succeed are the ones who burn themselves out. And we're all human, right? We're going to burn ourselves out if we just keep going with no rest, no recreation. Create that friends and family around you. They're so important. Don't undervalue all this, because paise aayenge, jayenge, it'll all happen. The only people who will be around will be your friends, your family, mashallah, and your children, and so on, okay? So it's very, very important that you carve out that time for them. I would make sure that when I was flying back, I used to fly 3 weeks a month when I was in London and then later on in Cairo. 3 weeks a month, Monday to Friday, I would be out. But because I was working in the Middle East in a time and Pakistan, Friday, Saturday was the official shutti. So I would make it a point that I would take a flight at 4 a.m. from Cairo or Pakistan back to London on a Friday morning so that I could get there by 11 or midday, take a quick shower, and then be able to go pick up my children from school and then spend the rest of quality time throughout the weekend with them till Sunday night, okay? And I tell you that there is no replacement. No money can buy you that sort of time and that sort of privilege. So carve it out for yourself, make sure that that's part of your effective growth process, okay? Now, let's just talk a little bit about the global climate at the moment, okay? It's a disaster. I wake up in the morning, I look at Geo, ARY, Hum, I feel thoroughly depressed and I say, kya ho gaya is mulk ko? Then I switch because, you know, half of me still lives in London. I switch to Sky News and CNN and BBC World. And I think, acha phir theek hi hai, it's all okay. Because the same stuff is happening there right now, okay? So we're going through that phase, okay? The last time this happened was 2008. We lived through it. Usse pehle 2002 mein hua tha, and I ended up without a job. I was running a startup at the time. It collapsed. We called in the liquidators. I had not been paid for 8 months during that time. I was the chief operating officer of the company. The CEO, very depressed, hung his head and took his private jet to his villa in Marbella, and we never saw him again. So what I'm saying is, this time we had the longest bull run, 14 saal, 2008 to 2022, before we hit the thing on the head again, okay? And it's a phase. It's going through that. The world will realign. You know, you look at interest rates, they are probably the highest. I left London 3 years ago, 4 years ago. I used to pay 0.5% on my mortgage. Today it's 6%. Okay, so yeah, we are 23% here, but we were paying about 10 or 11 anyway. So again, the multiples are similar. So again, it's just a phenomena, it's a process for now. So my advice to everybody here is hang in there. It'll pass, just like everything else in life, inshallah. And if you're running a startup, conserve the burn, make it slow, keep your eyes on the horizon, and just aim to survive till you get to the next stage and things start looking up again. Subah hogi phir inshallah. Okay? But at the upside, there's so much happening in the UAE and KSA. Okay? It's alive, it's kicking, it's there. Some of you who may have been there will know. I went back after 55 years last November, and I was just completely blown away by just the energy, the excitement, the stuff that they're doing out there is just phenomenal, okay? It will happen, inshallah. So I've given some numbers there. $3.5 billion came into the Middle East in UAE in 2022. Is that right? Yeah. So the UAE and KSA will remain the largest financial
from the financial perspective, the largest markets in the world for the foreseeable future. Guess what? Pakistan and Egypt remain the largest customer perspective. 225, 240 million people, depending on when you wake up in the morning, and 110 million people in Egypt, right? So they're massive markets. Think Careem. Careem, and I know for a fact because I know the journey that they've been through. In 2019, when they were being offered by Uber, they were offered $600 million for their company. Mudassir Shekha and Magnus Olsen went back and said, no, we're worth 3.1 billion. And they said, how's that? And they said, that's because we've just launched in Pakistan and it's one of the biggest markets, and they justified the size of the market, right? And that meant that the Uber guys actually ended up from 600 million to $3.1 billion just because of the Pakistan market, okay? So never underestimate the potential of it. I know it's zara wo kehna zara mushkil lagta hai, and I doubt it myself sometimes, but the potential is right there. There's 240 million consumers, a quarter of a billion people nearly. And so the fundamentals will always be there, okay? So my guidance to those who are finding it a bit difficult here, look towards UAE and KSA at the moment. Because Careem ke revenues wahan se aate the, ARPUs wahan bade the, size yahan pe tha. So if there's a combination that can be struck over a period of time, then that becomes a very attractive way to build your business and effective growth, as we call it. So I talked about it already, just to give you hope for the future. It's happened before, it'll happen again. Careem, EMPG, some people know it, some may not, Zameen.com and Bayouth, then Keep Trucking. All of these are Pakistani founders who've achieved billion-dollar valuations. So keep your chin up, it's out there, effective growth is still possible, it will happen inshallah. You just have to make sure that you keep your nerve and get those weekends off, okay? Thank you so much. Thank you so much, Zohair Saab. Now I'd like to call upon Kawal from CXO Forum. He's going to be the moderator for the rest of the evening. Over to you, Kawal. Thank you. Hello. Assalamualaikum ji, मेरा नाम कमल मसरूर है, आई एम द फाउंडर ऑफ CXO ग्लोबल फोरम. मैं सबको एक तो वेलकम करना चाह रहा था कि इस मौके पे आप लोगों ने ज्वाइन किया. मोस्ट ऑफ द CXO मेंबर्स एंड यू नो अदर पीपल हु आर अराउंड, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इस इवेंट को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया. थैंक यू सो मच जोहेर साहब. आपने अभी जो थोड़ी सी देर में जितनी इन्फॉर्मेशन दिया, आई थिंक ये किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो सकता है जिसमें आप जो है ना जितनी इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह आपने दी है. एंड आई बीन एन एडवोकेट के ये वाले स्टेप्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर अ कंपनी. मैंने पर्सनली, ये मेरा दूसरा इनिशिएटिव है CXO ग्लोबल फोरम. आई स्टार्टेड माई IT कंपनी बैक इन 2013 और वो बहुत ही चंद बेबी स्टेप्स से शुरू किया था. बट आई थिंक एग्जीक्यूशन इज़ द की. उस वक्त कुछ नहीं और दिमाग में था, बस एक चीज़ करनी है और विद द विल के. दूसरी जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी वो ये कि जो बिजनेस ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, आई थिंक उसको सेल्स पर्सन होना चाहिए, उसको बेचने आना चाहिए. अगर वो अपनी टीम पे डिपेंड करता है कि जी वो मेरे लिए करेगा और मैं AC वाले कमरे में बैठूंगा, तो फिर ये चीज़ होने वाली नहीं है. आपको बहुत हार्ड टाइम देखना है. एंड जो स्टेप्स जोहेर साहब ने बताए, आई थिंक उन चीज़ों को आप फॉलो करें कि आपको पता हो कि मेरा वर्किंग डे क्या है और मैंने कितना टायरलेसली काम करना है और कितना मैंने रीच करना है. एंड सेकेंडली, हमने CXO ग्लोबल फोरम स्टार्ट किया बैक इन 2020. अभी कोविड नहीं आया था, फरवरी में कोविड अनाउंस हुआ था. तो हमारे लिए एक ये सिचुएशन थी कि हम एक ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड करने जाएं. सो जस्ट एन आइडिया, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं एक किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता और उनके फ्लैगशिप को लेके हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर लेते और बहुत क्विक हो जाता. मैंने कहा नहीं, मुश्किल काम लेते हैं मगर ये कि अपना बनाते हैं कुछ. सो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड कि हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, पाकिस्तान का फ्लैग लेके हम चल रहे हैं. एंड फॉर्चुनेटली वी आर इन मोर देन 8 कंट्रीज़. हमें बड़ी हैरत होती है जब अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं और मुझे नहीं पता वो कौन लोग होते हैं,
टर्की से आए हैं, एंड देन ऐसे रैंडम एरिया से आते हैं जिसका हमें नहीं पता होता. सो दैट्स अ सक्सेस, बिकॉज हमने एक ही चीज़ पे देखा. हमने पहले ये कोशिश नहीं की कि हम कहीं फंडिंग या इन्वेस्टमेंट रेज करें. हमने पहले ये चीज़ की कि नहीं, वी नीड टू मेक अ ब्रांड, उसकी सेल्स करनी है, उसकी आउटरीच करनी है. एंड आई थिंक वी आर नाउ द ओनली सी लेवल कम्युनिटी जो प्रॉपर एक डिजिटल हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है. हमारे वी हैव मोर देन 900 मेंबर्स. हमारी प्रेजेंस है. वी हैव एन ऑफिस इन लंदन, वी हैव एन ऑफिस इन अटलांटा, सऊदी रियाद में, क्योंकि वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है. एंड देन वी आर गोइंग टू ओपन एन ऑफिस इन दुबई एज वेल. तो इंशाल्लाह हम लोग बड़ा एक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो दिस कम्युनिटी इज़ फॉर यू, बिकॉज एक आम आदमी जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, मे बी स्टार्टअप होता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो आते ही उसको एक मार्केट एक्सेस मिल जाए. सो CXO इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत कम टाइम के अंदर आपको एक तो मार्केट एक्सेस मिल जाता है, एंड देन आपको ट्रेंडिंग पता चलती है कि इस वर्किंग प्लेस में हो क्या रहा है. ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप जब साइलोज में होते हैं, आपका छोटा सा एक डोमेन होता है जिसमें आप काम करते हो, तो आपको इतना वो एक्सपोजर नहीं मिलता. ऑल्दो वी हैव इंटरनेट, और जैसे हम रिसर्च करते हैं कि हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, बट इट्स बेटर कि आपको ये पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है. और जब आपके पास एक ग्लोबल कम्युनिटी होती है, सो वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ के जब सऊदीया से और दूसरे मुल्कों से लोग जो हैं वो आपसे अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करते हैं. इसका हम मैकेनिज्म बना रहे हैं. वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका फेज़ 1 है. तो इंशाल्लाह हमने फेज़ 2 एंड फेज़ 3 भी प्लान किया हुआ है. दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर मार्केट प्लेस B2B, जिसमें लोगों को काम करना जो है वो आसान होगा. वी आर ब्रिजिंग कि हम जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसको पाकिस्तान के साथ हम कनेक्ट करें, और यही हमारा एम है कि हम इसको एक दुनिया की सबसे बड़ी सी लेवल कम्युनिटी इंशाल्लाह बनाएंगे, जो कि एक ग्लोबल थिंक टैंक भी बनेगा, अंदर लॉबी भी करेंगे इंशाल्लाह. सो थैंक यू सो मच. मैं दोबारा एक बार आप सब लोगों का, पैनलिस्ट का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. अभी हमारी एक छोटी सी पैनल डिस्कशन है. हमने कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इन्वाइट किया जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया. वो कैसे किया उनसे फिर हम बात करके देखेंगे. थैंक यू सो मच जी. मेरा माइक कौन सा है? सो अब सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा एहसन रशीद साहब को. ही इज़ द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट खजाना एंटरप्राइज. एंड देन वी हैव वसीम इरशाद, द फाउंडर एंड CEO of Wow Health. And then we have Mudassir Abbas. He is the CEO and founder of WebWiz Solutions, IT Solutions कहते हैं. We have very enterprising lady, Zunaira Umar. She is the founder and CEO of Square Peg, I guess organization का नाम मैं ठीक ले रहा हूँ. So unfortunately हमारे ज़िशान साहब जो हैं वो अभी तक उनको दुबई से फ्लाइट नहीं मिली, वो नहीं आ सके. And then we have another panelist जो को आज टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से she couldn't join. तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ आपके साथ, यहीं पे बात कर लेते हैं. ये मेरा ठीक है सर, ये आप लोगों का होगा. जुनैर आप यहाँ आ जाएं. इट इज़ ओके. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मैं बड़ा एक कैंडिड डिस्कशन लेके चलूँगा क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी इसी तरह है कि जो इफेक्टिव ग्रोथ. हेलो. हाँ, और आप सारे लोग क्योंकि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड किया है एंड यू हैव द एक्सपोजर कि आपने कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है. आप पहले जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी थे, ग्लोबल OEM है यार इसको, ग्लोबल OEM ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने मेजर बिजनेस सेक्टर के साथ काम किया है. आपसे ही शुरू करूँगा. आवाज़ भी ठीक ही आ रही है. हेलो हेलो. हेलो हेलो. ये वाला तो चल ही रहा था. हेलो हेलो हेलो. हाँ ठीक है. हेलो. ये भी इसको भी देख लेना क्योंकि ये स्पीकर.
सो ऐसे में आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है इंडस्ट्री की, यू बीन इनटू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस. क्या कुछ तरह के चैलेंजेस आए आपको वर्किंग विद लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज यहाँ पे ये भी बड़ा एक मुश्किल होता है कि यहाँ की जो आईटी कंपनीज होती हैं या मे बी जो वेंडर कंपनीज होती हैं वो वहाँ तक रीच आउट नहीं कर पाते, मे बी कि टेंडर इश्यूज होते हैं या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. बट यू हैव बीन वर्किंग विद ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स और आपको पता है कि लोकल इकोसिस्टम किस तरह चलता है. तो क्या किस तरह के चैलेंजेस जहाँ पे दे कुडंट मीट टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और वहाँ पे आपकी प्रेफरेंस होती है कि नहीं ठीक है यार हम बाहर की कंपनी से काम कर लेते हैं? Thank you, Kamal. And Assalamu alaikum everyone. And especially Zoe sir, what a presentation. मैं सारी copy कर ली है सर आपकी presentation. That was real learning. And undoubtedly you are a leader and we're lucky to have you in our midst. So thank you, Kamal, and my fellow panelists. अच्छा आपने बिल्कुल सही कहा. So I was with VMware before that Oracle. तो वो journey बड़ी easy होती है आपका एक global multi-billion-dollar brand होता है आपके पीछे, आप कार्ड देते हैं उसमें Oracle लिखा होता है. So you get into any office you can, and as a country at VMware also. So वो बहुत privileges होते हैं. जब when I went into this Khazana enterprise, and then so we wanted to make it a fintech. That's what where the name came from, Khazana, because SCCP हमें शुरू में जो मुझे याद है रजिस्टर ही नहीं करने दे रहा था ये नाम. हाँ किस तरह फिर उसका लोगो भी इस तरह से था कि it looked like. So I'll give you a funny example. मैं I was going somewhere, Parliament House पे कोई मीटिंग थी क्या था पता नहीं की. तो मैं रुका तो उन्होंने आया गार्ड, उसने कहा हाँ जी कहाँ से. मैंने कहा खजाना. अच्छा उसने कहा हज़ारों के खजाना से. उसने कहा जाओ अंदर जाओ फॉर. तो दैट्स द फनी थिंग. एनीवेज तो इसमें आके ये टू बिल्ड अ ब्रांड अगेन, सर जोर साहब ने बताया कि यार यू रियली हैव टू हसल अ लॉट. आपके जब वो ब्रांड इतनी बड़ी ना हो आपके साथ तो आपको फिर वो 10 काम करने पड़ते हैं, बट वो करने पड़ते हैं. When we won the 911 project and we established that helpline across Pakistan, we were probably 8 people in the company, but we had partnerships through our previous my experiences with people like Zia Chishti at that time. He was heading IBEX, so we brought him as one of our partners, and we then deployed it and everything, and that started off. So you have to hustle a lot. You can't wait for anything to happen. You have to make things happen basically. And never give up, just keep hitting it. In terms of, अब ये तो एक angle हो गया, ये भी still Khazana Enterprise, obviously backed by one of the legendary Bob Din, Tazazuddin का नाम है, an expert from the US. So you still had a lot of runway to do experiment. Then we built Khazana Pay for payment, automation for the government. But I've invested in 2 startups locally. तो मुझे उनका साइड में बताना चाहूँगा कि उनको क्या problems face आती हैं. One is a fresh produce startup. Fresh Subs के नाम से कराची में ऑपरेट करता है. and I was trying to gain some pointers कि आने से पहले तो वो अभी तक वहीं पे हैं कि जी आप you can't एक बैंक अकाउंट एक स्टार्टअप के लिए खोलना है अभी भी. That is a problem for 3 to 4 weeks. Yes, आप सोचें अब उसके बाद then you have corporate cards. Now you're telling me for paying salary he has to go वो check देता है या cash देता है. तो banks वो उसमें enablement नहीं करते. And then if I want something of that sort, they charge a really high amount. अब एक startup है with 4 founders out of the university, they would try to save their money. तो इस तरह के challenges हैं जो नए startups को face हो रहे हैं. वो I think SCCP should address those. Online कर दिया SCCP ने बहुत सारी चीज़ें, but अभी भी you need at certain point you need to engage the income tax law, you need to engage an auditor to really do stuff. And that's where the cost goes up. इसी तरह बैंक का भी है. अब मुझे ये कहा था कि यार मैं अपनी ये सारी चीज़ें करूँ और कैश लेके फिरता रहूँ, कैश ट्रांजैक्शन करूँ, या मैं अगर आपको जानने वाला ना होगा तो आप 3 हफ्ते से पहले अकाउंट भी नहीं खोल सकते बैंक में फॉर कंपनी अकाउंट. सो ये रियल प्रॉब्लम्स हैं that I think are not allowing our startups to really focus on what they want to do. But the irritants which we should remove obviously. But having said that, overall you have to keep hustling, never give up, and have a plan. Basically, Mr. Zoe साहब ने कहा. Excellent, thank you. I think इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा ease of doing business का जो issue है वो मतलब जो है इसको हमारे काफ़ी one of the top challenges में से आता है. आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की और आपका माइंड में था कि हेल्थ टेक स्टार्टअप करते हैं
ये किस तरह आपने, क्योंकि आपके भी मैं ऑफिस आया हूँ माशाल्लाह, आपने हमारी बड़ी टीम रखी हुई है, तो क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की थी क्या, और किस जगह पे आपको ये चैलेंजेस आए कि यार हमें ग्रोथ में कोई ये इशूज़ आ रहे हैं, बीइंग इन पाकिस्तान, जो आपके पाकिस्तानी स्टार्टअप है, और फिर आप अपना ये भी बताएं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, तो वो थोड़ा सा एक हमें वो एक प्रोसेस है आपका जहाँ पे आपने स्केल किया, हैविंग अ टीम, आई डोंट नो आपकी अपनी टीम कहाँ पे पहुँची है, तो वो थोड़ा सा हमें ये प्रोसेस भी बता दें, व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू हैव एक्सपीरियंस्ड। Thank you. Assalamu alaikum ji. Thank you, Kamal, for having me here. It's a real opportunity to listen to Zohair Saab, mashallah. He is a brilliant mentor. And I will just like to add my 2 cents, to this whole discussion that what we have been working on. Of course, generally things work in the same way for all startups. आपकी timing क्या है, आपकी product क्या है, ऑडियंस क्या है, इज़ दिस अ राइट फिट फॉर द ऑडियंस और नॉट, ये सारी चीज़ें तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड थिंग्स जो कि हर एक को पता होनी चाहिए व्हेन यू जंप इनटू दिस होल थिंग. लेकिन आई विल जस्ट शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड दैट मे डिफर फ्रॉम other people. Wow Health is a startup that is being run in US. We have got 350,000 doctors using our platform, and we are not a medical billing company. We are replacement to the insurance for the gig workers, for the drivers, like Uber, Cream, for the people who work on the restaurants, right? For the people who can't afford, hefty amounts of insurance premiums, right? And they have to pay out of their own pockets. We build a platform for them where we offer them, to cover their routine care, medical, issues, and then their comprehensive care, that is your emergencies and hospitalization kind of stuff. We never raised any fund. We did all at our own. We bootstrapped, we did it, we generated revenue, and we are going, at our pace and with a good penetration. I must say that there are a few very good names which are our clients, like Whataburger का नाम आपने सुना हो अगर आप US में किसी का इंट्रैक्शन हुआ हो, तो this is one of the largest food chains with 52,000 employees, right? They are using our platform. Fazoli's are using our platform. आपने Walmart Health का नाम सुना होगा. That is one of the huge investments that were made in 2019-20 in healthcare. Walmart Health is closed, and all of their clients, we are replacing them. One of the largest is Leslie's, and Leslie's has got Mr. Beast as their brand ambassador. So this is the word which Gen Z must know it. So we are trying to build it our own slowly. We are trying to get penetration. We are not very huge team. We are a team of like 100 people. Half of the founders are in Pakistan, few are in US, and we brought in same model to Pakistan. We started before COVID. पाकिस्तान में हम कोविड के बाद आए. We took our penetration here. हम लोग एक बड़े स्लो पेस में चल रहे हैं, लेकिन मार्केट रेडीनेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान के अंदर वी हैव गॉट चैलेंजेस के लोग, पीपल डोंट वांट टू पे, नंबर वन, हैवी अमाउंट टू गेट चेक्ड ऑनलाइन, right? And second problem is that this is healthcare is episodic, right? You don't just buy like आपने ad देखा, खाड़ी पे कोई चीज़ आ गई, आपने कहा let's buy it, right? It's not like that. आप you just feel the pain when you get sick. And हमारे पाकिस्तान में भी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते पैसे up front, right? For the prevention. So there are a couple of challenges we're facing. That's why we are pivoting into a different direction. But I think के सारे lessons जो US से learn हमने किए हैं उनको use करते हुए we are able to get around 200,000 customers on board in Pakistan, and we are growing at the same pace. Very good. Yes, thank you. So ये सारी आपकी organic growth है. Yes, exactly, it's organic. Thank you so much. So Mudassir, आपने एक IT company establish की, और उसका भी हम चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी synopsis दी है, and you are one of the successful IT company as far as I know, because आपके तौर पे कई बार आपका ऑफिस भी आ चुका हूँ. तो कैसे आपने शुरू किया, and then यही again मैं कहूँगा टॉपिक से रिलेटेड है, क्या कुछ challenges आए और अभी Thank you so much. I started this company 15 years ago.
बट आई वाज जस्ट गोना से दैट कि हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे पास जिस तरह सर ज़ुहैर ने हेलो ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हमने बहुत स्ट्रगल किया और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो मिस किए जो अब हम सोचते हैं कि शायद वापस जाके हम ना करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के सेशन रखने का भी फ़ायदा ये है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें और उन मिस्टेक्स को ना रिपीट ना करें। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि 10 साल ये ख्वाब ही रहा कि जैसे सर कह रहे थे कि फ्राइडे को 7 PM पे आपका जो है ना वो फ़ोन ऑफ हो जाना चाहिए, ये तो 10 सालों तक तो मैं ये नहीं कर सका और कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल एंड कोई लीव नहीं ली, कोई ऑफ नहीं लिया। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया तो ऑर्डिनरी इसी तरह से था, मैं डेवलपर था, डेवलपमेंट से था, तो बिडिंग स्टार्ट कर दी। फिर वी बिकम इन 2009 आई स्टार्टेड इन दिसंबर, वी बिकम इन 2011 नंबर 1 in plugin development in ELAS. So we developed 300 plugins. We were giving the services that time. With the passage of time, moved to the portals. All the time, actually, I want to do something new which is coming in the trend. It's not about the earning perspective. It was passion कि जो भी नया आ रहा है उसको अडॉप्ट करना है। तो उसके बाद SaaS में चले गए, मोबाइल ऐप्स आए, मोबाइल ऐप्स में चले गए। 2016 में ब्लॉकचेन आया, ब्लॉकचेन में भी 7 टीम बिल्ड कर ली और ट्रेडिंग बॉट्स बनाने शुरू कर दिए, वैलेट्स बनाए डिफरेंट तरह के। In 2019, one of my app got an award in Amazon Cloud City, AWS, and they published the article about that around the world. So they select in the year the top startup as well. I work in the health, COVID के वक्त ऐप लॉन्च की US में, लॉ डिपार्टमेंट के लिए काम किया, सो वर्सटाइल रहा। सो द गुड थिंग इज़ दैट कि मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम किया। शुरू में सर्विसेज पे किया, बाद में रियलाइज़ हुआ कि इक्विटी इज़ अ कॉन्सेप्ट टू, तो इक्विटी लेना भी शुरू कर दी, पहले नहीं था पता इन चीज़ों का। तो डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ काम किया। एक बहुत बड़ा हमने स्टार्टअप शुरू किया कि जब क्रिप्टो स्टार्ट हुई 2016 में, तो लोगों को आइडिया नहीं था कि किस करेंसी में इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग करें। तो हमारे ध्यान में एक कॉन्सेप्ट आया कि हमने एक बॉट बनाना है जो फुली ऑटोमेटेड हो, यानी विद जीरो एक्सपीरियंस एवरीबॉडी कैन ट्रेड दैट। इट वॉज नॉट ईजी जॉब ऑनेस्टली स्पीकिंग। कभी कभी मैं कहता हूँ कि मुझे पता होता उसने इतना टाइम कंज्यूम करना है तो मैं शायद ना करता। तो हमने मैंने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि सिग्नल्स कैसे बनते हैं, मार्केट कैसे गिरती है, क्या एनालिटिक्स हैं। तो विद जस्ट 4 टिप्स ऑफ डाटा मैंने हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स बनाए, उनको एनालाइज किया। तो उसको हमने रिफाइन करते 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 आज हमारे साथ ब्लॉकचेन अलायंस पार्टनर आया। दिस इज अ वन कंपनी, बाय द वे 15+ कंपनीज आई बिकम को फाउंडर्स विद देम, फाउंडर्स एंड को फाउंडर, बट दिस इज वन ऑफ द कंपनी। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जब हमने दूसरा बॉट बनाया तो इन 2 years ago, तो हमने जब दूसरा बॉट DFA स्पेस के लिए बनाने के लिए लॉन्च किया, हमने फंड रेजिंग की, तो 4 hours में हमें $20 million रेज हुए ब्लॉकचेन के थ्रू, बिकॉज पीपल ट्रस्ट ऑन अस, दे यूज अवर बॉट। सो ओके, इन दिस जर्नी व्हाट हैज बीन रियलाइज ऑलरेडी, सर ज़ुहैर ने सारे वो पॉइंट कह दिए कि हमारे लिए तो जॉब बहुत डिफिकल्ट हो गई है, वो सारे पॉइंट। तो एक जो बहुत बड़ी चीज़, अब हम आते हैं मिस्टेक्स पे, एक बहुत बड़ी चीज़ जो स्टार्टअप्स में करते हैं, वो ऑलरेडी इधर एक पॉइंट रिटन भी था एंड आई ऑलवेज एनालाइज कि अपना ब्रेक इवन नहीं कैलकुलेट किया होता, पता ही नहीं होता एक्स नंबर्स आ रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नंबर्स दिखा रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो 10x ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, वो 25% जैसे मैंने कहा उसमें कहते हैं नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो 10x ग्रोथ चाहते हैं और उसको उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो अपने नंबर्स, अच्छा ये भी नहीं कि वो नंबर शो करते हैं, दे इवन डोंट नो अबाउट, दे डोंट हैव मार्केट रिसर्च। आप अच्छा यहाँ पे मैं स्टार्टअप्स उनको ले रहा हूँ जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप्स किसी एक्सपीरियंस टीम अपना 4th 5th टाइम कर रही है, उनको शायद इस सेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो पहली दफ़ा स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो मार्केट रिसर्च करें। ब्रेक इवन उनको बहुत डैमेज करता है। आप इस हद तक प्रोडक्ट ले जाते हैं कि लॉन्च भी की होती है, यानी अब ग्रो करने वाली होती है एंड यू हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड, एंड आपने सारी अपनी इक्विटी भी प्लान नहीं की, वो सेल कर तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फेलियर की 3-4 महीने तक ऑफिस में नहीं
तो टीम चलती है। उसकी वजह यह कि आपने एक अच्छी टीम बनाई और टीम को जब तक आप रोटेट करते हैं, सब कहते हैं कि स्टार्टअप में आइडिया डेफिनेटली इट्स बीन 30 जो Yes, absolutely. बिल्कुल, thank you so much, Kavil. सबसे पहले तो ये कि I am a last minute plug-in, so if you're expecting Nilofer, I'm really sorry for that. Also, I told Kavil that I was an introvert, so I think the first thing that he did was put me up on the stage, so thank you for that, Kavil. So basically, the reason why the Square Peg was founded, and by the way, the Square Peg, the name itself says it all, that a square peg doesn't fit in the round hole. So our vision is that it's okay to be different, and why should you fit in if you can stand out? So it's a digital marketing agency. It's boutique by choice. We take on at the most 6 to 10 retainers at one point in time. The reason being that we want to differentiate Pakistan as a quality market and not just low cost. Most of the people that sort of turn to Pakistan, they are looking for cheap labor services. We want to sort of remove that identity and be known for providing quality services, which is why we do very highly personalized work, sort of like skunk works का अगर आपने नाम सुना हो या SWAT team का नाम सुना हो, that is who we think ourselves to be. Journey हमारी start इस तरह हुई थी. I have experience working in the North American market, and I felt that there was a gap in terms of what digital marketing means. So that was the vision with which we started the Square Peg, but then I realized that there are lots of challenges. There's a dormant workforce in Pakistan, which are women that are highly educated, but they can't work 9 to 5 because societal obligations. At the end of the day, we live in a patriarchal society, and we cannot deny that, right? So what we did was that we started off with a hybrid work model, where we had 3 days work from home and 2 days from office. Then we also provided remote opportunities to our team members. And let me tell you something, that if you don't ask a woman why she took a career gap, if you don't ask a woman why is she taking a leave if her son is sick, these women will outshine and blow your mind away with the kind of work that they do. So I think that's what this... Thank you. So I think that was, the idea was to bring quality, and then we're also trying to create impact by providing opportunities to women and also extending it out to the community via our outreach program. One of the few challenges that I faced as a woman is obviously work-life balance. As Zuhair pointed out, it's much more important than women. Other than that, again, when we initially used to have client pitches, they wanted us to come to their office. So everywhere I had to go, somebody, a man, had to accompany me because I can't go into unknown places all alone. 2 years of my life, I started off in 2020, 2 years of my life are a blur. I don't remember what we were doing. But my recommendations for startups, especially those who are in the service industry, is to start off by reducing your fixed cost. So we started off with part-time team members, and then eventually when we reached a point in time where our company was significantly built, the break-even had been achieved and we were in profit, that was the time when we decided to build a full-time team. And we are actively investing in our team culture. We have internal learning sessions, external learning sessions, team building activities. And I'm trying to build a culture that I want to be part of at the end of the day. So I think that's about it. Thank you.
और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो एक इनिशियल उसकी स्टेज होती है उस पे वो कब तक जो है वो रिलाय करें, मतलब क्या टेन्योर होना चाहिए, इस बारे में अगर कुछ ऐड कर सकें आप। किस वक्त उसको स्केल करना, आई मीन एक तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया एंड यू गॉट पेइंग कस्टमर्स, then you can venture out into capturing more market locally. और जिस तरह आजकल है हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स और कंपनीज आर हेडिंग टुवर्ड्स द KSA region, Middle Eastern region, and they're trying to explore. I think which is the best thing of the crisis that happened. मैं कहता हूँ क्राइसिस आया उसकी वजह से ये होगी सारी कंपनीज जो शायद अभी ना जाती हैं बाहर सब चली गई, तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि they all they pivoted immediately and they said कि यार okay, and वो कहते हैं they followed the money. Where the money was going, वो वहाँ पहुँच गई. So that was very, that's the, I think, bright spot from the crisis. So coming back to it, here you've got a paying customer, then you go for scale. उससे पहले if you invest, you keep on burning. आपका burn rate बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर then you will get, जिसको कहते हैं ना कि burn out both in terms of your founders, fatigue हो जाती है, and then आपका जो रनवे है वो भी कैश फ्लो भी एक्सपायर हो होगा, तो आपको वो बड़ा केयरफुल रहना है. इफ यू गॉट पेइंग कस्टमर्स देन ओनली you go into scaling up. So I'll give you an example. The health tech startup that I'm on the board of in the US market focused. So now they're getting some funding basically from another from some capital firm, and they're giving out some equity. So now they're saying कि यार अब हमने MVP कर ली, clinical study आ गई, सब हो गया. Now we're going to go, when this funding comes, then we're going to scale up. So bootstrap कर लिया उन्होंने, but they did not invest any further until unless they said कि we're getting a paying customer, the clinical study is there, and then we'll scale up basically. So if you scale up just by, before you have 2 or 3 paying customers, that's a risky line, because you still haven't established yourself कि product market fit 100% है कि नहीं है basically. That would be my reply. पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जा रहे हैं बाहर, और there are small companies में भी जो planning कि हम पाकिस्तान में अपनी कोई मार्केट देखें. आपने एक established market में एक startup रखा, then why you actually selected to work in Pakistan, which is a difficult market as you were saying, क्योंकि यहाँ awareness का बहुत बड़ा issue है, लोग बहुत कम health पे spend करते हैं, खाने पीने पे करेंगे, बाकी चीज़ों पे करेंगे, अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए हर चीज़ का खर्चा करेंगे, मगर ठीक करने के लिए नहीं करेंगे. So why you decided to launch in Pakistan? आपके पास और बड़ी मार्केट. This is a very interesting question. और मेरे ख्याल से ज़ुहैर साहब already answered it जब उन्होंने क्रीम की एग्जांपल दी कि क्रीम was launched in UAE and then got successful there and then came to Pakistan. हमारा भी पाकिस्तान, it's not we are only in Pakistan, we are also in Malaysia. लेकिन जो पाकिस्तान में आने की सबसे बड़ी रीज़न थी, उसके 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, दिस फैक्ट रिमेन ऑलवेज देयर दैट वी आर वन ऑफ द लार्ज पॉपुलेशंस, राइट. सो लाइव्स बहुत ज़्यादा हैं, रिमोट एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप कभी देखें कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग माइनस द फीमेल डॉक्टर्स विच आर नॉट प्रैक्टिसिंग माइनस द डॉक्टर्स हु लीव पाकिस्तान, जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बचते हैं, ये नंबर ऑफ डॉक्टर्स और जो आपकी पॉपुलेशन है, इसका गैप इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट. सो इफ दीज बोथ लाइन्स आर गोइंग अपार्ट, so there we don't see any point of intersection between them, right. That means this has to be bridged by some technological solution, and that was the main reason we brought in WOW to Pakistan. Second important fact is that when you earn in dollars and you spend in rupees, you can have an impact. वहाँ से जितना हमें एक क्लाइंट पे करता है, उसमें से जितने पैसे हम सेव करते हैं, उन पैसों में हम लोग यहाँ पे 50 कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, राइट. सो दैट मेक्स परफेक्ट स्ट्रैटेजी कि अगर हम कुछ बजट वहाँ से यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहें एंड ओवर टाइम वी जस्ट कीप मूविंग, तो शायद ये ऑटोमेटिकली रोल होना शुरू हो जाएगा. सो दैट वाज द मेन रीज़न वी केम टू पाकिस्तान. Thank you so much, Kamal bhai.
सबसे बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, ऑर्गेनिक ग्रोथ की सबसे एक पॉजिटिव चीज़ क्या है शुरू में? एक तो ये कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप कोलैप्स के चांसेस बहुत कम है, ठीक है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़ी ही तेज़ी से हायरिंग करती हैं फिर कोलैप्स करती हैं. द गुड थिंग फॉर विज वेब सोल्यूशन इज कि इवन इन द टाइम ऑफ कोविड वी हैवंट फायर एनीथिंग, वी वर हायरिंग, राइट. सो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग. सो ऑर्गेनिकली हमने उसको. फिर दूसरी चीज़ ये कि अब आपने कहा कि स्केल करेंगे. स्केल्स के परस्पेक्टिव से ये है कि ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर मूव हो गए. हम इक्विटीज़ के ऊपर हमारा बिलीव हुआ कि शुरू में तो पता नहीं होता. इक्विटीज़, कोलैबोरेशंस, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टार्टअप्स टू. इफ़ दे आर गोना थिंक कि उन्होंने ग्रो करना है और तेज़ी से ग्रो करना और इफेक्टिव ग्रोथ की बात करते हैं तो कोलैबोरेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए. इसके अलावा इक्विटी शेयरिंग के ऊपर, फंड रेजिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बड़ा उनको पता चले फंड रेजिंग के मॉडल्स क्या हैं. तो ये सारी चीज़ें now we understand that, so we are actually growing to the different ways. कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप क्या होगी? बिकॉज हमको एक ही चीज़ समझते हैं कि ये मेरा कस्टमर है, मैं इसके लिए काम कर रहा है. ये कौन सा एलिमेंट होता है जहाँ पे आप कोलैबोरेट करते हैं और किन लोगों के साथ करते हैं, फिर पार्टनरशिप के साथ? Okay, so it normally what happen कि बहुत सारे जब आप जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जाते हैं तो आप म्यूचुअल सिनर्जीज फाइंड करते हैं. फाइंड करके कुछ आपके शॉर्ट टर्म्स प्लान होते हैं. शॉर्ट टर्म्स प्लान होते हैं कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रो करना है, वो एक टर्म्स के ऊपर आती हैं और डिस्कस करती है. बट समटाइम्स दे हैव अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग इन परस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स करनी है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं और कॉमन गोल्स के ऊपर लॉन्ग टर्म काम करते हैं, जहाँ पे उनके लिए सेपरेट्स होना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है या उस तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया होता है. तो जब आप अगेन कमिंग बैक टू दैट कि हम अब वर्सटाइल पर्सपेक्टिव से कोशिश करें कि डिफरेंट मार्केट्स को हम टच करें और ऑलरेडी हम कर रहे हैं. डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम करें क्योंकि जब आप वही कहते हैं कि आप डिवाइड योर एग्स टू द डिफरेंट बास्केट्स. सो सेम डिफरेंट बजाय इसके कि आप जैसे हमारी स्ट्रेटजी के बजाय इसके कि हम एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% इन्वेस्ट करें, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं और एक इक्विटी लेते हैं, ठीक है. अपने आइडियाज़ भी बना के फिर इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि नाउ यू कैन take over this idea, you can invest in that and you can take ownership on that. That way what we are doing in our strategy कि different investors, different products parallel develop हो रही हैं. and the good thing is that कि हमारे ऊपर किसी एक प्रोडक्ट के कोलैप्स होने का भी प्रॉब्लम नहीं है या उसकी ग्रोथ अगर स्लो है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर विज वेब सोल्यूशन फोकस कर रही है और फिर डिफरेंट मार्केट्स को भी एनालाइज कर रही है. हम ऑलरेडी एक मार्केट शुरू से क्योंकि हम ज़्यादातर हमने यूरोप में स्टार्ट किया और यूएस में थे, लेकिन अब हम डिफरेंट मार्केट्स को एनालाइज कर लिए हैं क्योंकि अब हमारी टीम इतनी स्ट्रेंथन है कि वो डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके कर सकें. हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम उनको देखिए स्टार्टअप्स को सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है. दे डोंट वांट कि दे गेट ड्रेन और उनको ब्रीथिंग के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए, उनको मनी की रिलैक्सेशन चाहिए. सो व्हाट वी डू इन दैट पर्सपेक्टिव कि वी गिव देम वेरी डिस्काउंटेड डेवलपमेंट और सम टाइम इवन इफ दे आर अ रिपीटिंग कस्टमर तो हम उनको MVPs फ्री बना के दे रहे हैं, ठीक है. हम शुरू की प्रोडक्ट्स फ्री बना के दे रहे हैं. तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम अस. इन दैट पर्सपेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म they are doing a commitment with us. So that's a positive thing कि इस तरीके से हमारे वो जो प्रोजेक्ट्स हैं हमें उसमें इक्विटीज़ भी मिलती है, उनको सपोर्ट मिलती है. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ 10x ग्रोथ जो हम कहते हैं क्योंकि उनको शुरू में ऐसी सपोर्ट मिलती है कि जिसका हमें रिटर्न विद इन 1 ईयर मल्टीपल टाइम्स मिलता है. हमारी जो SME सेक्टर है बिल्कुल उनका जब एक ऐसा टाइम चल रहा होता है जहाँ पे बड़े अच्छे रेवेन्यूज आ रहे होते हैं, कैश पॉजिटिव होते हैं, कैश फ्लो बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो उस टाइम को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. उस वक्त हम बिल्कुल एक ऐसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि सर रोलर कोस्टर राइड हमारे Absolutely. आने वाला है और उसके लिए रेडी नहीं होते हैं. SME सेक्टर में ये बड़ा ही चैलेंज होता है क्योंकि उसको तो इधर या तो पेमेंट नहीं करते या वो आने वाले चैलेंजेस के लिए रेडी नहीं होते. उसके लिए अगर आपके पास कोई बिल्कुल जी. आई थिंक 100% वेरी क्लीशेड बट वही बात है, व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर वाली चीज़. सो अभी जो आजकल हालात चल रहे हैं एज यू सेड दैट अगेन आपकी स्ट्रैटेजी को एक एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक फिट आपने 1 साल बाद या 6 महीने बाद नहीं लाना. आजकल द वे द इकोनॉमी इज गोइंग यू नीड टू रीवैल्यूएट योर स्ट्रैटेजी एवरी मंथ और एटलीस्ट एवरी क्वार्टर, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि एंटिसिपेट कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, मार्केट ट्रेंड देख के कुछ नहीं कर सकते. So again, my recommendation for all startups would be that
have a strategy in place that you reevaluate after every quarter, ठीक है? अपने OKR set करें, अपने company के KPI set करें, देखें what is working, what is not, and then review and revise it. Because जैसे जैसे आपकी economy में dips आ रहे हैं, आपका strategic fit का जो time frame है, that is being reduced. At our end as well, what we have realized is that the only way to survive in the Pakistani economy is to have most of your revenue in a foreign currency. So इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, as my colleague said, we are exploring new markets. We're going to GITEX in Dubai next week. And other than that, obviously, as Zuhair Saab pointed out, MENA is a huge region that every Pakistani startup should look into. Uske alawa US ke and we already have clients in US and Europe, but we're actually going to create our company there and see and go to market in the US directly. तो यही बात है कि आपको reevaluate और realign अपनी चीज़ों को करना पड़ेगा so that you're able to pivot in time and do a little bit of risk mitigation. Current situation में easy access to fund. Access to fund is still there. Thank you. I mean, but now I think एक investor, let's say, walks into this room, there will be probably 50 startups pitching to it. वो लेकिन एक ही investor होगा. अब उसका अपना एक mindset होगा, उसने health tech में नहीं करना होगा, शायद tech में करना invest या fintech में करना हो. तो वो अपने mindset में होगा, लेकिन वो सारे startups को approach कर रहे होंगे. तो वो easy access to funds नहीं है unfortunately, और वो Middle Eastern market में नजर आ रहा है इस वक्त ज़्यादा. I will just add one point. Go lean. This is the time to go lean. Just stay low, right? Because ये time नहीं है overspend करने का, ये time नहीं है expand करने का, ये time है just anybody who can stay in the market for next like 2-3 years, they will be one who might grow, you know, because the time will change, of course, and funds will come, and investors will look for the opportunities to invest, right? At that time, the people who are still there, right, and they have got a track record कि वो 5 साल, 6 साल, 7 साल खड़े रहे हैं, right? I think those will be the best people to bet on. जी, अच्छा, एक तो अभी चैलेंज ये भी आ रहा है कि देखें, मनी ड्रेनेज भी चल रहा है, ब्रेन ड्रेनेज भी चल रहा है. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आपके रिसोर्सेज, जो अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो एक रिसोर्सेज ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, एक मनी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है. इसके अलावा जो बड़ी अच्छी मैंने बात की कि आपको ना स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, इफ यू आर इन एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, बट मे बी सम. आप देखें, जब कोविड आया तो कई ऐसी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एग्रेसिव हो, ठीक है, विद इन 2 weeks वी लॉन्च ऐप एंड दैट बिकम सक्सेसफुल. इट डिपेंड्स कि अभी नीड क्या है. अगर आपका स्टार्टअप ऐसा नहीं है जो खास तौर पर इस वक्त किसी गैप को देख रहा है, तो फिर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें आप सर्वाइवल मूव के ऊपर रहें और उसके मुताबिक चलें. दिस इज द वे. और हम उससे लगा के सवाल है, सिंस यू वर ट्रैवलिंग टू कनाडा रिसेंटली, यू वर विद अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. Now, आपने what do you see different between the mindset of international market as compared to the challenges people are facing here? Okay. बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे हमने शुरू में बात की तो हमने कहा कि जी इक्विटीज़ किसी से भी बात करें तो वो बड़ा एक अजीब समझता है. वहाँ पे आप जितने स्टार्टअप देखते हैं आपसे बात इक्विटीज़ के ऊपर करते हैं. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि यार आप एवरीबॉडी शुड इन्वेस्ट इन दैट. ये एक बड़ा डिफरेंट माइंड सेट है. ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ है, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. आप अगर स्टार्टअप्स में जा रहे हैं तो आपको ऐसे फंड्स मिल रहे हैं, आपको ऐसे लोन्स मिल रहे हैं जिससे आपको बड़ा बेनिफिट है. ठीक है, इसके अलावा वो देखें एक और बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं टैलेंट को. तो वो कह रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आएँ. ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे लेके आएँ. अगर आप फाउंडर रजिस्टर कराते हैं अपना, अगर एज ए फाउंडर रजिस्टर कराते हैं तो आप 5 एम्प्लॉयज़ ला सकते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ, दिस इज डेफिनेटली दैट इज़ अ फ्रेंडली फॉर IT.
एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन दैट। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसी वजह से हमारा ब्रेन ड्रेनेज क्यों है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज बाहर मिलेंगी तो ब्रेन ड्रेनेज होगा। आप खुद सोचें एक रिसोर्स के ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ पर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है जितना एक इंजीनियर तैयार करने में बचपन से बड़ा करता है। तो इट इज़ $1 billion लॉस टू द कंपनी टू द कंट्री, ठीक है। तो ये बड़े लॉसेस क्यों है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन अभी हमारा सिस्टम जो है वो इतना फ्रेंडली नहीं हुआ। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्रेंडली सपोर्ट नहीं है और कुछ ये है कि हम एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसीज वाइज बना नहीं सके, जिसकी वजह से एक ऐसा सिस्टम बन सके कि हम ग्रो कर सके। इस सिस्टम के अंदर हम रन करते हैं, एफर्ट करते हैं और जब खाने की बारी आती है तो someone is going to take it. So that's a difference actually between that and us. So it's a question or rather a small comment for context and then two-part question for the entire panel, especially for Wasim Saab and Wasim Saab, but for the entire panel especially. So you said that, you know, the next 2 to 3 years will definitely be tough, and I think everybody kind of goes and gets that, and not just with Pakistan but all over. So number one is, are you guys specifically, what you guys know, what you see in your respective industries, is there any exploration or you know, investment, whether resources, money, time, etc., on maybe augmenting your current portfolio of products or services and discovering new technologies, how it can augment it or complement it? And number two, just now COVID changed the landscape of how people use certain service deliveries, right? And that had a huge impact. So that was question number one. Number two is, following that up, is given how COVID also changed and now ऐसा situation है कि लोगों की basic needs have kind of morphed or changed, are kind of skewed, right? I mean, it's not a normal distribution anymore, right? So, number one, do you think that ये last करेगा, and will it have a lasting impact on future needs and future how people view technology, just how COVID did, or do you, and so how do you sift through the needs of people who are there only because of the current economic situation, and how they will actually change going in the future, which will be maybe a paradigm shift in how they view and interact with technology and services and products. So are you guys going, and what is your take on this, and what should we be looking at? मुझे आखिरी सवाल याद है। एक चीज़ है कि इस वक्त आपने कहा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस मूड में है, तो वो क्या प्लान कर रही हैं और ये किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर द कंपनी आर मेकिंग द डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑलरेडी एक्सप्लेन राइट नाउ। व्हाट यू आस्क्ड अबाउट अस, व्हाट वी आर डूइंग, वी ऑल नो दैट कि हर एक, जैसे हम IT से हैं तो हमें पता है कि AI इज गोना टेक, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन के अंदर AI की इंटीग्रेशन आने वाली है, ठीक है। हर एक AI इज गोना change every applications, every startups, every job is going to get changed. So what we are focusing right now is that to get into that as deeper as possible, maybe in a slower mode, but definitely there is a demand coming through. So in this situation, what we have to do that कि जिस आप देखें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन का समटाइम्स सेल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं करें तो आप टीम बिल्डिंग में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। समटाइम्स आप टीम बिल्डिंग से हटे हुए हैं तो आप अपनी पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें डिवाइड करना है कि अभी मेरा फोकस कहाँ बढ़े और हाउ आई एम गोना कम बैक व्हेन द सिचुएशन इज गोना बिकम फ्रेंडली। इट डज नॉट मीन कि सिचुएशन फ्रेंडली नहीं है अभी। इन टेक इंडस्ट्री, व्हेन आई वाज इन जापान, आई हैड अबाउट 200,000 इंजीनियर्स चाहिए, जो इंडिया से वो 30,000 मांग रहे हैं। गुड इंजीनियर्स दे नीड दैट। स्टिल इन द IT industry, because we are in the IT industry, the demand is still there, right? We have shortage of resources even now in this situation. It means someone is demanding that, and we are looking for the resources. We cannot say that in this situation, if the market is for this industry, it is a dead or it is not responding. Yes, it's a bit slower, but it's getting ready to push. और दुनिया की कोई भी मार्केट ले लें, हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें पता है, रियल एस्टेट में कोई भी मार्केट ले लें, उसमें जब अप्स और डाउन और रीसेट्स के फेजेस आते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रीसेट फेज, ठीक है। जैसे ही उस रीसेट फेज में एडजस्ट होना है तो मार्केट हैज़ टू
definitely come back. And if I understand it correctly, you're saying is after the reset, after the dust settles, Yes. major areas and avenues that we could be focusing on is AI. Is in AI. Yeah, AI is completely is going to blow up. Right? That actually answers both the first and the second question. Okay. So you can answer. Yeah, I was just, add on healthcare. Like, COVID was one of the, the events that we all have witnessed, throughout our lives. कि ऐसा ना कभी हमसे पहले witness हुआ और ना हमारे बाद शायद अल्लाह करे ना हो. लेकिन that was a time जब सब चीजें रुक गई. And we were in healthcare at that time. We started establishing digital clinics. People were not going to clinics, so we started establishing digital clinics जहाँ पे there was zero human interaction. We started creating, mobile clinics जो आपके through your mobile app आपके factors, and we got attraction, right? Because that was the need. Second is here now when we work, like for example, आपको US के बारे में बताऊँ, right now we are working in healthcare benefits, but for future we are thinking that we might be booking lots of beds upfront in the hospitals at a reasonable price, and then selling it to the corporates that need it, right? That is something that we feel that will be in demand after 5 years or 7 years. Or even individual. And we are trying to figure it out now, right? Like, जैसे ऊपर के बारे में कहा जाता है कि they have booked lots of rooftops of buildings in US because of the reason that they feel air taxi will be something that will be common in the coming future, and they are going to need that, right? So they are investing in it right now. That's how every company thinks they have strategy for the future, right? Then these things we are using today we may become obscure. What we do at that time, right? So I think every things like that. Thank you, Wasim. Thank you. Adi, further कोई questions आपका है? I have a question. जी please. I'm sorry. There's been एक चीज़ listen बड़ा अच्छा आप लोग के information का मिलता है. Because I live in Rawalpindi state of Pakistan industry at some point in time. So क्योंकि हम developing phase में है as a country, and we all say the government ये नहीं support करें, the government ये support नहीं करें. So कल मतलब we were so persistent कि कल हमने ground breaking किया, land भी किया, funding भी वही दे रहे हैं बनाने के लिए, women product display center है ऐसे नहीं. तो वो building अगले 3 साल में तैयार हो. So we were persistent in pursuing. तो जैसे आपने कहा 2 लाख engineers की जरूरत है, मतलब for my knowledge बताइए. क्या ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए कि क्योंकि एजुकेशन में पाटना यूनिवर्सिटी का वैसे कहते हैं देयर वाज नो बच्चा जिसने रजिस्टर किया एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में जिसकी मैं देखती हूँ डिमांड कि अगले 5 साल में सिर्फ इस्लामाबाद में मुझे इंजीनियर्स चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, डिज़ाइन में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग बिजनेस, उसके अंदर कुछ चाहिए, मार्केट में नहीं है. तो उसके लिए हम एज एन इंडिविजुअल एज ए कंपनी being in Pakistan, is there anything that कोई collaboration, कोई synergies हम कर रहे हैं? So I would be really. If I could go first. Yeah. So I think that this is a very valid point, and this is one of my pet peeve points कि इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम लोगों ने नस्ट में इंटरव्यूज़ मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए. माई टीम इज़ देयर, वी वेंट देयर आई थिंक कुछ मंथ पहले, और वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने MBA किया हुआ था. अच्छा, तो इट वाज अ मॉक इंटरव्यू. पूछा जी आपने किस में MBA किया है? HRM में. इससे पहले आपने क्या किया है? हमने इन्वायरमेंटल साइंस में बैचलर्स किया है, या हमने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया. तो मैंने कहा व्हाई डिड यू शिफ्ट दे टू दिस पर्टिकुलर फील्ड, लाइक इट्स डिफरेंट. तो कहते हैं जी जॉब नहीं है. मैंने कहा प्लीज डोंट से दैट इन द इंटरव्यू, दैट इज नॉट द राइट आंसर. बट माई पॉइंट अगेन टू एड टू योर पॉइंट इज के देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ज़माना है. इन्होंने कहा पैराडाइम शिफ्ट आएगा, AI आ रहा है, वेब 3.0 आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है. दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है. पहली बात तो ये, क्या इसके जॉब्स हैं कि नहीं विद इन पाकिस्तान. अगर पाकिस्तान में नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स को कहाँ प्लेस करेंगे, पहले इसके बारे में वी नीड टू हैव अ डिस्कशन. एंड देन द कोर्सेज नीड टू बी मॉडिफाइड. आई रिसेंटली डिड माई EMBA फ्रॉम NUST 14 साल आफ्टर माई फर्स्ट डिग्री, एंड देयर वाज नो कोर्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग per se. Although digital marketing is one of the upcoming fields, but there wasn't a degree in that. एक कोर्स था छोटा सा
one for marketing analytics. So it's, yeah, and Lust is supposed to be like Islamabad is one of the best business universities. So this was very disappointing for me as well. So I think that there is a need for the industry and the academia to sit down, devise एक तो majors courses which fulfill the upcoming and the predicted future needs. कि जी future में किस cyber security है, AI है, क्या चीज़ है जिसमें हमें resources चाहिए. So I think that's a very valid and essential point of this page. अच्छा इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, ठीक है, एक चीज़ और ऐड करूँगा. जैसे आपने कहा सपोर्ट के लिहाज से, आप वी आर नॉट गोइंग टू से दैट देयर इज नो सपोर्ट, बट देयर वाज अ बिग गैप बिटवीन 2013 टू 2019. वी रियलाइज कि हमें जो है हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसमें ज़्यादा काम करना चाहिए. दे आर डूइंग गुड, बट स्टिल द पॉलिसीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू. वो पॉलिसीज़ जो स्ट्रेंथन करें इंडस्ट्री को और जो एम्प्लॉयज़ है दोनों को, मतलब दोनों को स्ट्रेंथन करें. इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान में कितनी इमेज इज बैडली इफेक्टेड. कितनी आईटी कंपनीज हैं जो यहीं पे हैं, जस्ट रजिस्टर्ड होती हैं किसी भी बाहर कंट्री, ऐसे या यूके बेस या सिंगापुर बेस या दिस एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान. दे आर नॉट बिल्डिंग द इमेज ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो व्हाई इज दैट? पहले मैं पॉइंट करता हूँ कि इमेज आप देखिए नए स्टूडेंट्स निकलते हैं, दे नीड अ गुड इंजीनियर. सो व्हाई दे नॉट बिकम अ गुड इंजीनियर? कि शुरू में हमको कोई चांस देने के लिए तैयार है. अब चांस देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है. जिनको बाहर की कंट्री में इस तरीके से उन्होंने किया कि अगर आप किसी स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे तो इज गोना वर्क विद यू फॉर 2 years or 3 years, राइट? नाउ कंपनीज आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन दैट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है आपके एम्प्लॉयर्स, मैं अगले दिन इवन यूनिवर्सिटी में बैठा था, उन्होंने कहा कि हमारे मिड ऑफ द क्लास एक जो लेक्चरर था उसने कहा कि मैं आगे क्लासेस नहीं लेगा. सो देयर आर नो सच काइंड ऑफ सपोर्ट टू कि हमें ऐसी पॉलिसीज तरतीब देनी है जो इकोसिस्टम बिल्ड करें, जो सिस्टम को इस तरह से करें कि हम उस पर काम करें और हम अगर कोई एफर्ट डालें तो वो एफर्ट रिटर्न आए. इस तरीके से ये एरिया मेरे ख्याल में और लैक करता है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. मेरे 2 पॉइंट्स. देखिए एक तो बात ये है कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड वो ऑलरेडी कम है, राइट? और ये बात ऐसा नहीं गवर्नमेंट की रियलाइजेशन नहीं है, तो उसे बढ़ा दी गई है, यूनिवर्सिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो भी बैच आएगा उसको 4 साल चाहिए मार्केट में निकलने के लिए, राइट? और यूज होने के लिए उसको 6 साल चाहिए, राइट? अच्छा, दूसरी तरफ ये देखें, बट वन थिंग दैट कैन इमीडिएटली इम्प्रूव थिंग्स इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ओके, द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल स्किल्स है. आप देखें कि हम लोग हायर करते हैं, हम फास्टर जब स्टूडेंट का इंटरव्यू करते हैं तो हम देख रहे होते हैं यार कि हमें कोई हमें ज्वाइन कर ले, राइट? एंड दे आर सो मेनी ऑफर्स कि दे आर चूजिंग कि मैंने इधर नहीं जाना उधर जाना है, राइट? एंड हम ऑफर अपलिफ्ट कर देते हैं. अगर हम नॉर्मल फ्रेशर को दे रहे हैं, लेट्स सपोज 60K, उसे देते हैं 1 लाख के, राइट? स्टिल दे वोंट जॉइन, राइट? एंड वी फील दैट दे जॉइन. दूसरी साइड पे या लास्ट के बारे में भी इसी तरह की बात है. दूसरी साइड पे आप देखें कि रिफा या एरिड के स्कूल्स में आते हैं, हमें मसला क्या आता है? इट्स नॉट वन ब्रांड नेम. अगर आप मतलब ईयर्स राइड कर रहे हैं तो 30 ईयर जितनी भी आप चले जाए, आप बात करें तो स्कूल का FYP क्या होता है? मैंने ई-कॉमर्स स्टोर बनाया, दैट इज समथिंग दैट वाज दैट 20 years. ये अब कोई अगर चीज़ें इतनी ही हो चुकी हैं कि नॉन टेक आदमी भी बैठे और किसी एक CMS को उठाए, उसको कंसिडर करे और वो आधे घंटे के अंदर अपना प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर सकता है, राइट? सो दैट मीन्स कि वो स्टूडेंट व्हेन ही वाज सेलेक्टिंग हिज FYP एट दैट टाइम समथिंग वेंट वेरी रॉन्ग. Nobody told him that, भाई, you are not at par. You have to do something that you will be evaluated based on, right? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं खुद एक यूनिट को खुद देखता हूँ, that is your UX. Because मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि even as a CEO, I am called their lead. Because I personally feel कि the people interact with my platform the way I design it, right? And I am not UX designer. I was hiring UX designer in last month. We interviewed 32 people, right, who called themselves as UX engineers, but they couldn't, explain what is the difference between UI and UX, right? So this is a lag. I think कि जितने लोग produce भी हो रहे हैं ना, अगर हम सब मिल के अपनी voice अपनी इंडिया तक पहुँचाएं और उनका level uplift कर दें, राइट? इतनी जॉब है मार्केट के अंदर कि आप देखिए जो निकलता है उसको जॉब जरूर मिल जाती है. मेरे पास इस टाइप में ओपनिंग्स है, आपके पास ओपनिंग्स हैं, हर कंपनी में ओपनिंग्स हैं. वी डोंट फाइंड राइट टैलेंट. दैट्स इट. जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं. एक तो इंडस्ट्री एक्टिविटी में लिंक
दूसरा इंडस्ट्री के लोग शुड बी ऑन द बोर्ड। मैं आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ जो कोर्स को अपलिफ्ट करके बताते हैं उनको। अच्छा, अब मैं अभी गया उनको टॉक की कोर्स की तरह, तो मैंने अब क्या किया, मैंने कहा यार थैंक्स टू कमल रिकॉर्ड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर करता रहता है HBR इकोनॉमिक्स। तो मैंने उनको भेजना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बच्चों को ये पढ़ाना शुरू कर दिया, अपना कोर्स तो जो है ही है, ये मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस बेसिकली विद इन, ताकि बच्चों को पता चले कि बाहर क्या बात है। तो यू हैव टू मेक योर ओन एफर्ट, एक ये करना होगा। दूसरा आई थिंक ये सेम प्रॉब्लम है, आपसी बैंक के सहयोग से बात करें, वो कहता है जो लोग आते हैं वो फिर कोच हो जाते हैं और बुक नहीं रहे, फिनटेक वाले रहते हैं, तो हर जगह शॉर्टेज है। तो बैंकिंग एक्सीलेटर भी नहीं है, टेलीकॉम एक्सीलेटर भी नहीं है। इसका आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप टेलीकॉम की थ्योरी तो पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी से, आप तो काम ना किया हो टेलीकॉम में, आप यू कांट से कि आपको पता है टेलीकॉम का, दैट्स द बेसिस। दुनिया में अगर 400 टेलीकॉम्स हैं, 500 टेलीकॉम हैं, ये टेलीकॉम एक्सीलेटर्स, जब बैंकिंग एक्सीलेटर्स 4 बैंक मिलकर बताना उस लोकल में बना लें ताकि रिसोर्सेज पूल हो सके, तो ये सोल्यूशन की इंडस्ट्री आएगी, जैसे हेल्थ टेक में है, आप सॉफ्टवेयर में मिल के आप इंक्यूबेटर्स बनाए। ऑलरेडी जो इंक्यूबेटर्स हैं उसी में कुछ चीज़ ऐड कर दें, या नहीं है अगर बैंकिंग को स्पेसिफिक कुछ चाहिए या आपको टेलीकॉम को स्पेसिफिक कुछ सब मिल के आप बनाएं, तब वो गैप या स्किल्स की शॉर्टेज पूरा होगा। और ये जो चीज़ें आप दे सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स, वो आप उनको पहुँचाएँ किसी भी तरह से। गिव देम एक्सेस टू पेड ChatGPT वर्जन 4। हम नहीं स्टूडेंट सपोर्ट कर सकते, तो मैंने ये भी मतलब जैसे मैं कहता, मैंने कहा $20 है ना महीने के, आई गिव इट, आप यूज़ करें एक Gmail बना के शेयर करके सारे, तो वी हैव टू इट, तभी वो अपस्किल होगा, वरना नहीं अपस्किल होगा। अच्छा, आई वुड जस्ट आल्सो लाइक टू ऐड, जैसे आपने कहा कि 4 साल पहले वो पढ़ते हैं और 2 साल में तैयार होते हैं। सो अगेन इफ समबडी हैज़ सीन द IB सिस्टम जो आजकल स्कूल्स में है, उसमें बच्चों को बड़ी एक हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो अगर हम फॉर इवन एट यूनिवर्सिटी लेवल हमारे बच्चे इंडस्ट्री के साथ काम करना शुरू कर दें फ्रॉम डे 1 इन वट एवर फॉर्म, इट कैन बी अ कोर्स और पार्ट ऑफ एन इंटर्नशिप दैट्स कंपल्सरी, सो आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हेल्प डेवलप दिस जो आपकी रिसोर्स इन द राइट डायरेक्शन। स्टार्टअप के आइडियाज़ जो है वो बहुत सारे, देखिए जहाँ पे भी US तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने स्टार्टअप्स के आइडियाज़ जो है स्टूडेंट से करवाते हैं, ठीक है, और हत्ता कि जो इनिशियल सैलरीज हैं वो 70% रीइंबर्स होती है। डेफिनेट आई नो देयर आर डेफिनेटली सम लिमिटेशंस टू, बट देयर आर सम इजी पॉसिबिलिटीज व्हिच आर पॉसिबल, और उसके लिए जस्ट जो है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। I just add one thing, and the only reason I'm saying it is because right now, right, before this thing and during this thing and for the past 2 days I've been dealing with this, I've been trying to hire somebody, and the FY50 वाली चीज़ है आपने जो बोला ना इंडस्ट्री के साथ, I don't even care about the coursework. They can make an e-commerce website, but at least do it yourself. Most of the FYPs that are on college road, I take an interview, I give them assignment, including my interviews, I give them exercises to complete time up, right? And most of them don't know what they've done in their FYPs. And just if the professor actually goes and says, "Okay, listen, तुमने खुद ये किया है कि नहीं," that would be more than enough. I've always just told them, "Yeah, there are 10 steps to go. Just at least first climb the first 2 steps yourself." Then we can work, but there's a CS person here who does not know C++. हाँ, हम लोग मैं आपकी बात को सेकेंड करते हैं ना, जैसे हम लोग बैठ के ये नहीं देख रहे होते कि हमें को बड़ा टिप टॉप किसी को बंदा चाहिए होता है कि बस हायर कर लें, स्पेशली जब भी टॉप होता है हमें आई बिल्कुल बंद आए यू सिटिंग इन इंटरव्यू, मैं उससे सवाल पूछे, फर्स्ट इंटरव्यू उसने थोड़ा फ्रीलांस में काम किया, उसका पहला इंटरव्यू था, ड्यूरिंग इंटरव्यू ही वाज टेकिंग द कॉल अगेन is there a problem? सर मैं मोटरसाइकिल मांग के लाया हूँ दोस्त से, उसको मोटरसाइकिल चाहिए, मैंने कहा तुम जाओ मोटरसाइकिल देख वापस आ, बुक किया 2 घंटे वापस आ, मैंने उससे पूछा चल 2-4 प्रश्न पूछे, तो मैंने कहा चल मैं काम में कर लेते, काम में कर लूँगा, आप मुझे काम बस देख लेते, इसराइल नहीं था, मैं काम देख लेके मैं कर लूँगा। तो मैंने अपने यूएक्स डिज़ाइन से कहा कि एक पेज डिज़ाइन कर, मैंने कहा यार तो पेज डिज़ाइन है, मैंने कहा लैपटॉप है, लैपटॉप मैंने उसको बिठा दिया, मैंने कहा मैं से पेज को बना देगा, ही टुक 1.5 आवर, उसने बेहतरीन पेज बना के उसने ला के मुझे दिखा, ही गॉट हायर्ड, ठीक है, एंड देन 1 साल के काम किया, उसने कहा मेरे घर में मसला मैं रिमोट करना चाहता हूँ, ही वेंट बैक टू भागो, फिर वो रिमोट काम करता रहा हमारे साथ, राइट, 2-3 साल में, नाउ ही इज डूइंग सम वेरी गुड जॉब एट अनदर कंपनी। लेकिन
कहने का मकसद ये है कि हम लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन टैलेंट अच्छा हो, बंदे को काम करना आता हो, कोई कम बेशी हो, उसको हम लोग ब्रिज कर देते हैं, कोशिश कर देते हैं, बिकॉज ऑल वी अर्न फ्रॉम, हम लोग कहाँ से अर्न करते हैं, हम भी तो अर्न करते हैं, आप लोग काम करेंगे, हम वो दिखाएंगे किसी को, बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे, खुद भी खाएंगे, आपको भी देंगे, दैट्स द सिंपल साइंस। थैंक यू सो मच जी। मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करूँगा NICAT का नेशनल CXO के तरह के टाइमली यहाँ पे किया करेंगे, प्रॉब्ली एवरी मंथ कोशिश तो करेंगे कि इससे ज़्यादा हो, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब लोग आए हैं CXO कम्युनिटी और आपने इस डिस्कशन को ज्वाइन किया। थैंक यू एवरीवन। हमने अभी रिक्वेस्ट की है बाहर से, उनका एक आइडिया था कि पाकिस्तान में वो कंपनी या स्टार्टअप से स्मॉल मीडियम कंपनी किस तरह कैनेडा में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, तो उनको भी अभी थोड़ी देर में दावा देंगे। बट मैं आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने काफ़ी वैल्यू एड किया, कुछ इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू जी फाता। बस इसके बाद फिर हम सेशन एंड करते हैं वो पर everybody. आवाज आ रही है ना? आपको सब विदाउट माइक पे आवाज आ रही है? So basically, कमल भाई से recently discussion हुई थी, we were talking about few things कि यहाँ पे पाकिस्तान में there's so much potential startup, तो हम लोग क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि they can go internationally. So a little bit background, I'm not talking about I've been in Canada since let's say 2006. And I've been very blessed. I started my first business at 23, and then one of the clients was Fortune 500 company, which we scaled for 12 years. We worked with them. To give you an idea, that one company we marketed for, today their revenue is $16 billion, and right now we are stuck at $1 billion as a country, and we are pretty much on the verge of default. So that's the difference. That's why I asked Utasir earlier. He was introduced by another friend, Sar. We said, yeah, he's there in Canada. Give him a call, talk to him. What can he do? He's a very successful businessman. Talk to him. We talked. We couldn't meet, unfortunately, but we talked. And the reason I asked him that question is, what was your experience? If I tell my perspective is different, we've been Canadian here for 23 years. Him coming as a successful Pakistani entrepreneur, which he experienced himself, and he talked so many great things. That will give you an idea of what can you do to take your business. Just keep in mind, Canada government does want people to come here. They do want you to come here. At the same time, everything comes with some kind of a sacrifice. Sometimes in dollars and sometimes in time. So we need to understand that. So my, one thing I'll just share with, I think you guys have seen this before. Everybody goes, hey, Canada, सबको बुला रहे हैं, Canada, सबको बुला रहे हैं, सबका visitor visa लग रहा है. Yes, लग रहा है, सबका नहीं. मेरी अम्मी भी है थी, वही तो सबका visitor लग रहा है. I mean, like I have multiple businesses and immigration is one of them. बेटा, इनको भी बुला लो, उसको भी बुला लो, काम वाले लड़के को भी बुला लो. I'm like, yes, visa लग रहा है, but पहले अगर 1000 लोग apply करते थे, 100 people just to get approved. Now, 100,000 people apply and maybe 1,000 people got approved. Percentage is not the same. The volume is too much, but they are welcoming. But they want very certain type of people. I see there's two different groups. One is all the successful already entrepreneurs. They are a little bit more mature, my age group, from 35 to 50 years. If I want to go to Canada today, they have different challenges. But if somebody is a startup, they have different challenges. So keep in mind, the Indian government is looking for two types of people. One, who can actually contribute to its economy, which is already established. They have different programs like a couple he mentioned. The one he was saying was actually more like a startup visa, as a recognition of that. Again, if somebody needs a question, I'm not going to go into detail, you guys can ask us or research on it. Anything you do, always research, not on one website. Many websites and then go back to the Canadian government website and audit it. बाद में ये audit के भाई scam हो गया. Because in Pakistan it happens a lot. So very important. So just to announce last year, like 478,000 visas in Canada, different categories. And you guys can, there's a lot of opportunities, especially for IT sector. Because earlier than this, I was at IH, there was another meetup, we were talking, and a lot of success
a lot of startups, IT people, and everybody had one problem. Sorry, but I was listening. First, I was listening, and they are the leaders in software in Pakistan. Problem क्या guess करें? Anybody want to take a guess? Huh? बिजली नहीं आ रही. I want to know the concept now. I can't do it in Pakistan. बिजली की आदमी नहीं देती है. क्या करें? उनका माइंड भाग जाएगा. बिजली को डॉलर लगा के उनका क्या करें, right? But the number one question, and some of them they have some businesses. Challenge was, yeah, client not enough. All clients कैसे लाएं? And the problem is when you say, ask yourself why you want to invest in Canada, US, or something. Everybody has their own reason. If Kamalbhai goes there today, he has a different goal. I have a different goal, and somebody who's 25-year-old, they will have a different goal. You need to ask yourself why. Ask how many questions. The problem with that book was everybody was an IT expert. All very good software. They all would be 100 times better than me in software. But none of them was a businessman. They were self-employed. There's a difference between self-employed and a business owner. Business owner is somebody who's sitting in Mexico or sitting in Pakistan while business is running somewhere else and still growing or closing. Then you're a businessman. Otherwise, you are self-employed, nothing wrong. I started as self-employed and slowly transition away. So whatever your startups are, or if you're an existing business, you can take it to Canada legally, and you have an option to earn $8. That's the biggest thing. So my background is mostly Pakistan, mostly in Canada. The reason is Pakistan we have certain mindsets, and we are a fight every mindset. Older generation we have. Some people call them dinosaurs or whatever. Why do you want to learn from somebody who's 30, 35, 40 years old? वो मतलब तेरे को पता है. मैं इस बच्चे को पे करूँगा. मेरा बाल गिरे हो तो मैं 30 साल से बिजनेस चला रहा हूँ. But not that much. I've been blessed to learn from somebody younger than me, and I've been very blessed to coach people who are 20 years older than me. Where I learned most about life, business, and everything was some of these people. I don't know who recognized some of them. So here we will start recognizing. So this guy, Sean White, 3-time US Olympic gold medalist. It takes another mindset to be that. He's an athlete, but very successful. He's one of the most wealthiest athletes at that time, but he lost a lot of money. Tony Robbins, anybody know Tony Robbins? 2 people. यही तो प्रॉब्लम है. हमने बिजनेस करना है लेकिन दुनिया के 10 बिजनेस कोचेस को सुनना ही है. हमने यही तो अपनी सुननी है. I think we get good things, but you get international exposure. Business international करना है. पैसे डॉलर में बनाने में mentality पाकिस्तान रुपये वाली. We need to change that. Even the same thing I was sitting in that when I told you, one problem was I was like trying to fight, but I'm like, you know, I can fight this. When I told them why I came to Pakistan, I said to somebody earlier, I came to Pakistan because I wanted to serve. And the jawab था क्या आया है? कोई मुल्क की खिदमत के लिए नहीं आता, पैसा बनाना आता है. I said, why? And the end, I met that gentleman. He's very successful. I said, sir, I respect you. I learned something from you, but I don't agree with one of the labor group. He said, what do you mean? Side again, I came to Pakistan. First year and a half, I did not have a business here. I was serving for youth empowerment. I was helping, putting my money, but that led to so many businesses. The one thing I want to give you guys, as a human in your startups, have a serving mentality. The more you serve, the chances of things are going to come back eventually. Our mentality here is take and see. And you will call love. Unfortunately, our real estate market is not on. There are some good people. I don't want to label everybody. There are some good people. Mostly are not. Damon John, Shark Tank guy. I think some of these guys have been there. They can take advantage of इससे बड़ा है हमारे पास. किसी ने सुना है कि सरदार जी के जो खालिस्तान की मूवमेंट को कनाडा में मारा है, बड़ी-बड़ी न्यूज़ चल रही है. कोई तो फायदा हुआ है. The whole thing is Canada work visas from 25 weeks and down to 11 weeks. Just because India का जो quota है कहीं ना कहीं जाना है ना. I know if I'm in Canada for 23 years, most of my sales things are Indian too. हमें फर्क नहीं पड़ता तुम इंडियन हो, पाकिस्तानी, जापानी, चीनी हो. क्या रिजल्ट लाते हो? Can you get me the results? You can. You're hired. I'm going to work with you. I don't want to put label on you. लेकिन अगर इंडियन $25 लगाता है ना, पाकिस्तानी से $1 लगाता है. ये फर्क है. We need to accept that. We don't have the same capacity as some people. So take advantage. If you really want to own your business, research. मेरी एक कमिटमेंट ऑनलाइन ये है. As long as I'm here, CXOK, Global Arts, किसी भी जाता हूँ, I'm not here to make money. I'm here to serve. पूछना है,
Ask me questions, ask my team questions. You want to go do it yourself, do it yourself. You want to go to somebody else, that's fine. When I launched my team here, actually by the way, I got emails, most of my team. I think earlier we were talking about that. Pakistan has this mentality. Young girls can open a business. BS. We are half that we're running. Imagine collecting $80,000 to $100,000 from people in Pakistan for the immigration and people can pay that. You got to empower them. There is an opportunity. Women can do it too, but when you are here, you want to take advantage of the timings and get things done. डॉलर में सारे बात करें मैं 2018 में से बच्चों को समझा रहा हूँ भाई डॉलर में हिंदू करो अब जब मार्केट क्रैश के सारे आगे डॉलर में पहले कोई नहीं सोचा and by the way I don't know who said again I could be wrong but a lot of things I've talked about next lockdown is coming prepare for it bad news but it's coming so have some funds and we have some backup strategy because UK already started going on smart lockdowns and Canada already have a new variant of COVID, and according to the new world order, it's going to happen. Economy will collapse one more time, so be prepared if you are a startup, okay? That's my contact. You guys are going to come talk to me, ask me, look me up online. I'm ready to help you. One thing is, there are programs for you to take your business. You can earn there, and last thing is, you can also get your residency, or you can take the kids there too. So look into it, research it, and I wish you all with your entrepreneurship journey, and hopefully some more people I'll get to see in Canada soon. Thank you. Thank you so much, Fahad. It was indeed a lovely session. Thank you, Kawal, for the great session. We really enjoyed. Now I'd like to call upon Mr. Air Vice Marshal Asad Ikram to hand over a token of appreciation to our guests, please. I'm sorry, but he is also running around juggling a lot of things for us. Sir, please. Assalamu alaikum ji. Zuhair bhai, Kamal, everyone else who's here with us today, thank you very much. It's always a pleasure and honor to have you here. ये सारे जो काम होते हैं, this is to be able to network and exchange ideas. And I was listening to the last part of the discussion here, and there was a very important question that Noreen asked about academia industry linkages. There's something that I've been trying to promote recently, and that is कि हम बात करते हैं कि students को हम internships दिया करें summers में, ताकि आके they get some hands-on experience in the industry. And this is true for all engineering and non-engineering as well. But then I think what could really make a big difference is कि अगर हम professors को internship try करें industry में, because then क्योंकि उनका जब थोड़ा सा mindset और उनका horizon हम expand करेंगे, तो I think that's where dividends will be lot more. तो I would suggest कि आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ आपने खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. If the industry can call in the professors कि आप आ जाएं, we'll pay you for a month whatever, और आके काम करें तो उससे उनकी learning भी होगी. They'll be able to pull in more students, और automatically without even us saying it, तो curriculum भी बेहतर होता जाएगा. And then we can really sort of jump start the whole activity. So I think that's one thing that we can do. So anyway, thanks a lot. One thing more that I want to just say is, there was a time, and I've said this a number of times on this floor, when I was growing up, and Zoe Bhai was also growing up, the rest of you are all younger to us. So ye tha कि, we were sort of, we used to think of Pakistan as being a superpower. And that's the way we grew up. But unfortunately, somewhere down the line, हुआ ये कि लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बहुत aggressive सोच है, regional power ठीक है. फिर किसने कहा नहीं regional power भी बहुत ख़राब है, वो साथ वाले जन मुल्क हैं वो they feel threatened by us, and then वो हम उससे भी अच्छा चलो ठीक है हम ये भी नहीं कहते. करते करते अब ये हालत ये हो गई है कि हम अपने survival की जंग लड़ रहे हैं. But then for a country 250 million strong, 6th largest country in the world, why should we not be a superpower? Why should we not
one of the leading nations of the world. Is it not a matter of responsibility for us कि हम हर चीज़ में लीड कर रहे हों, टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, मैनेजमेंट साइंसेस में, एनीथिंग दैट यू टॉक ऑफ. मसला ये हुआ है कि दैट क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस जो है ना वो हमसे निकाल लिया गया. हम लोग सारे आगे इस पे गुजारे पे, हर चीज़ पे चलो ठीक है काम हो गया, फाइन. नाउ वी हैव, एंड दिस आई थिंक इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच वन ऑफ अस, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो हमने रहना है ना इस मुल्क में, ठीक है. नाउ वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, इंडिविजुअल्स, people around us, give them that hope and give ourselves and everyone else that challenge to excel in anything, in everything that we do. And all of us together, whatever we do, चाहे हम मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, HR में काम कर रहे हैं, साइंसेज में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में है, नॉन इंजीनियरिंग में है, all of us together can really make a big difference. Yes, I myself a very strong proponent of policies. लेकिन हम ही लोग हैं जो policies बनाते हैं, बनवाते हैं, drive करते हैं. But then, if we start thinking that we have to be a superpower, we have to take responsibility of this globe, then I think all of us can really make a difference. So with that, thanks once again everyone for being here with us, and we hope these sessions have contributed towards some knowledge, learning, and we can all together make some difference for Pakistan and for the world at large. Thank you. So first of all, I'll request Zoe to please join us on stage. You've always led the industry here for launches, for another launch. Now I request Wasim Saab to please join us on stage. Ambassador Abbas Saab, please. Ehsan Rashid Saab. Ms. Zunaira. Mr. Fahad Khan. Mr. Fahad Khan, without the mic. Without the mic. And now, the person who has made this possible, Kaval, please join us. A big round of applause for him. With that, thank you. So in simple words, you guys have to be within the facility for some more time. Yes, you're locked. So please join us for tea, everyone. And those who want to smoke, you can please step outside.